व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं हाउ इज वंदे भारत एक्सप्रेस मेड इन इंडिया। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, टेक्निकल गुरुजी की वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। भाई लाइक जरूर कर देना। 1 2 3 गो। पूरा वेयर हाउस ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि इन्फ्लुएंसर्स को लाके और वेलकम। आई एम एट अ वेरी स्पेशल प्लेस। सुबह सुबह मैं यहाँ पे आ पहुंचा हूँ और आई एम एट द ICF इन चेन्नई। और अंदर चल के हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे इंडिया की आइकॉनिक वंदे भारत ट्रेन को कैसे बनाया जाता है, विद ऑल द मॉडर्न फीचर्स, विद ऑल द सेफ्टी फीचर्स, एवरीथिंग हैपनिंग अंडर दिस रूफ। सारा कुछ काम इंडिया में किया जाता है for Indians by Indians, maintaining the world class standards। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, मजा आने वाला है। We have got so much to cover, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शॉट भी अच्छे ले रहे हैं। टीजी इतने बड़े फैक्ट्री है। So this is the entire width of the. This width will be around 3.2 meters. Okay. 2,200 mm. 3.2. This is limited by The track width. because something called booming dimensions. This is manufactured in, sir? It is manufactured here only. Okay. Raw material in plate form we get from outside. Okay. There afterwards we process and then it's made here. You process as per your requirements. Yes, yes. So for example, from there till that section would be one coach. Yeah, that is 23.1 meters. Right, That is 22,100 meters. Okay, 23.1 meters is one coach. So this will be the underbody, no? I mean, it will be Yeah. flipped. Yeah, it will flip over. This is where the bogie is going to attach. To this, there will be correction. Acha. Connected to the bogie side. Bogie. So from this side it's mostly flat. This is all the underbody. That's the Yeah, you see that one with once it's flipped. So this is the motor car. the motor coach. Motor coach. So motor coach is the every alternate, as you told me. Yeah. Out of 6 we got 8 motors. 8 motor coaches. I think what we have seen with railways is, I mean, like whatever work is being done, I think it's very solid in terms of, I mean, the quality. It's like right at top. चाइना मान Most लिया। important thing is the safety. Yeah. It has to be very safe. When you are running the train set, at high speeds, even anything beyond 60 km also is quite, very high speed. Guys, we have seen welding normally हाथ से करते थे, but अभी हम जा रहे हैं robots कैसे weld करते हैं, because machinery it's everywhere and we're gonna see how robots are assisting in the welding. I would say high precision welding, because these trains, they are kind of, very high in terms of the quality and the precision, and robots are definitely a big help there. This is the robot, it's already programmed. We are doing the complete welding. So this is only used for the bogie welding, sir? Normally, robots can be universal. So basically this entire programmed for the bogie welding. Suppose tomorrow you want to use it for some other purpose, you can do it. So you program the arm and then it will just follow the path. Yeah. Guys, just have a look at the kind of machinery we got. This is a robotic welding machine here. I mean, look at the size of it and the precision. ये जो है, by the way, this is the bogie, which kind of has the wheel sets and goes under the coach. And यहाँ पे ये जो पूरी welding है, it's done by this robotic arm. It's fantastic to see. Tech is all around us actually. Tech is all around us. So this is the side section, sir? Side wall. Okay. This is actually the side wall. Uh-huh. The side wall. Understand. We have got the width of 1500. This would be the window, if I'm not wrong. That's the window. Let me see. We just almost as So this is the laser welding. yeah, it is they manually or And sir, what's the strength? I mean, is it really strong as well? yeah, it is as strong as any other welding. Oh, sir, abhi, all these clamps, what are they for? I Yeah, can see this the is the plate sheet. हाँ.
plain sheet will not have on its own enough strength. Just the sheet, it Yeah. just I know. So just to keep it all straight. yeah. So this is the same thing that we had. It just, and this is added, I think, sir. This is added, yeah. So this is the joint, for example. This is the joint. टेक्नोलॉजी कहाँ से So this is again the same length, sir, the full length. प्रोसेस होता है इसमें. Yeah. But- This is also 23.1 meter. On both the ends, the single window for toilets, and these are the standard passenger windows. साइड पैसेंजर विंडोज हो ना, वो कांच की. रो ऐसे पहली बार देखा है मैंने, वो है ना. शानदार. As this big machine behind me is just for complete precision and automatic spot welding. I mean, इसमें पूरे कोच की लेंथ पे जितने भी स्पॉट्स हैं जहाँ जहाँ पे भी हमको वेल्ड करना है, उस सभी चीज़ों को हम पहले से प्रोग्राम कर देते हैं. I mean, like 23.1 meters is the length of the entire coach, and this machine makes sure that all the spots, they are welded to the perfect precision with complete quality, and it's all automatic. I mean, यार ये जो पूरी फैसिलिटी है ना, इट्स कम्प्लीटली स्टेट ऑफ द आर्ट, आई मस्ट से. बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे. सो हाउ डज इट लाइक, सो दीज आर द क्रेन्स गोना पुल लाइक द एंटायर कोच. They bring it then here. And हाँ. So actually now standing in front now, it looks massive now, because normally in the photos you might not get the the front that we see is a complete like a nose kind of a thing. So it's mainly for aerodynamics, or it has some stuff inside as well. primarily for aerodynamics हाँ. and also aesthetics. Okay. So what all it has, sir? For example, the front section, let's say the driver's cabin, but this is like a regular seating. Yeah, from here it is. It's from here it's regular seating. Here, what we do, we provide the toilet. Okay. And how many like people are required to operate the train, sir, at time? Like two guys? Only one. Only one. One person. But is there like a one on standby as well, or just one Only one is here and one is in the on the other side? end of the train. Other Okay. cabin. So the roof would be, from inside it would be flat. Inside also there is a little bit of terrace in there. Okay. We do paneling. All these for wires, this. Even these for maybe sir the cables and stuff. We got a laptop charger हाँ. and C-type charger and USB charger. C-type also. Yeah. That's modern, sir. C type charging. So this suspension is a bit different. Like normally I've seen the springs and all, but this thing is kind of hydraulic. Yeah, lateral direction speed controls. Because like this is not very common, I must say, I think. So it has disc brake. Yeah, there is a disc brake. Okay. Normally we provide it on the axle. हाँ. We have to provide the motor. So what we do, we let axle they left free, and the brakes are brought into the wheel itself. So it's just like we have in the cars. I mean the So that area is totally free. yeah, but not only difference is the size of the disc compared to what we have in a normal vehicle. So across the length of this, we'll have a full 16 car in one place from end to end. Capacity is around 13. 13, okay. This actually, बहुत massive है, बहुत massive. I mean, only if you come and experience this, sir, then only you can gauge the scale. If I tell someone verbally that I went to ICF and it's this big and all, I mean, we can't imagine. You have to feel the sound. It's beyond imagination, to be honest. बहुत बढ़िया भाई, सीरियसली. अभी कैमरे में तो फिर भी हमें नहीं लग रही होगी देख के. क्योंकि तो देखना एक डब्बा जो होता है ट्रेन की ट्रेन. कितना बड़ा होता है. Sir, ideally for I think safety purposes and security issues, I mean the driver's cabin should have a feed of all the cameras in one place. all Is it like They can all cameras, हाँ. including So outside. normally what I've noticed is because the train track is like at times like different from the roads that we have. So network on the road journey, it's all fine. Mobile network normally we were having. Acha. Yeah, there it is. D-Link. Yeah. So that one is connected to the media content. Then we got a block box. हाँ. With media box is there. So it beams the media inside the coach. Okay. You just switch on your Wi-Fi, like your Vistara, and log into hook onto the. So we go to the local network and automatically. so it has a list of movies and all those things. Yes, Sir? yes. Totally. This is amazing, sir.
Guys, this is massive. I mean, I am right under a bogie. You can see the massive, wheels with. ये disc brake है, आपको पता है? This is disc brake. Like you can see the caliper right here. It's actually a disc brake. So this kind of a mechanism is required to stop, a moving train. I am under a coach right now, and the kind of tech we have inside, and this is just the underbody जहाँ पे हमको दिखता है कि क्या-क्या चीजें हैं. It's next level technology at the ICF in Chennai, producing Vande Bharat trains. Iconic. भाई सच में शानदार. ये यहाँ से आप अंदाजा लगा दो कितनी बड़ी होगी. Amazing day. I mean, आज कितना ज़्यादा मजा आया हमें at the ICF, wherein I'm sure, whatever we captured so far, you definitely enjoyed it like thoroughly, because जो हमने चीजें दिखाई हैं at this factory, I would say this is a mega factory. And by the way, this is the world's largest facility for manufacturing of train coaches. And यहाँ से इंडिया में जो ट्रेन्स आप देखते हैं वो बनाई जाती हैं. इंडिया से इनफैक्ट बाहर एक्सपोर्ट भी किया जाता है. मतलब द स्केल ऑफ दिस एंटायर सेटअप इज मैसिव. इट्स स्प्रेड इन एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड. और यहाँ पे so far whatever we have seen, I'm sure you enjoyed it. My experience was completely thrilled. And abhi yahan se it's time that we go and actually ride the Vande Bharat. Let's go on board and see how comfortable is the ride, what all features it has, and actually just feel like a passenger and enjoy the masterpiece that is built right here inside this facility at ICF Chennai. So guys, this is something which is rarely doable. हम कर नहीं सकते कि एक ट्रेन के सामने हम ऐसे खड़े हो जाएं. But अभी because we are at the ICF, we can do this and we can experience the scale. The scale of Vande Bharat, यार, the iconic Vande Bharat. और कितनी futuristic लगती है यार, India's own semi-high speed train with all advanced features. I mean, definitely an engineering marvel right from our own country. Amazing. Made in India. सच में शानदार काम किया हुआ है. So guys, here we are. I mean, this is the final product. कहाँ से देखा था? बिल्कुल Just have a look. आप एक बार देखो यार कि मतलब कितना ज़्यादा ध्यान रखा है. मुझे पता है सबसे अच्छी खुशी किस बात की है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ. Have a look here, right here. अगर आप नीचे देखोगे ना, तो यहाँ पे let's say if I am sitting here, right here I have this socket जहाँ पे एक मल्टीपिन पोर्ट है, एक USB पोर्ट है और फिर एक USB टाइप C पोर्ट भी है. तो बेसिकली completing all my needs for all my gadgets. अगर मैं यहाँ पे बैठ के काम करना चाहूँ with my complete comfort, I have all the power right next to my seat. And by the way, ये सभी seats के लिए lights जो हैं वो ये feather touch, Mercedes and Audi and BMWs and all these high-end cars, they have this feature. I mean, it's next to you in this train. This coach actually looks futuristic with all modern amenities. We have talkback systems. We have kind of emergency alarm systems. We have these displays showing all the finer details. The train has GPS, Kavach, multiple sensors, fire suppression systems in each coach, along with this braille marking, on these handlebars to get kind of, more accessible for the masses. Iconic, amazing. Guys, just look at the amount of technology that's running up this train. ये हमको कभी दिखेगा ही नहीं, ये हमको कभी पता चलेगा ही नहीं, because we'll enjoy the comfortable rides on our seats. But if you just see
यार कितनी सारी चीजें हैं, इतने इतने जो हैं वो अलग अलग कंपोनेंट्स लगे हैं, और टेक्नोलॉजी इज द बैकबोन ऑफ दिस वंदे भारत. वी कैन क्लियरली सी द काइंड ऑफ स्टफ इट हैज बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द वॉल्स, अंडर द फ्लोर, यू नो, अंडर द रूफ, पैक्ड ऑल अराउंड फॉर ऑल द अमेजिंग. वही ना, आज हर चीज का कोर टेक्नोलॉजी है. फ्यूचर भी टेक्नोलॉजी का ही है ना, एआई का, टेक्नोलॉजी. This is the place which serves you the amazing food of Indian Railways. You know, if you ever enjoy in any of your travels, आपको जो गर्मा गर्म जो खाना मिलता है वो सब यहीं से आता है. यहाँ पे we have these units जहाँ पे you know under the trays are kept. These are all the kind of hot units. So the pantry section, you know, maybe the basin or kind of we have a bottle cooler. If I see कि यहाँ पे you know there are all the bottles placed. So और क्या चाहिए यार ट्रेन में. देखना पूरी लग. बहुत गजब काम किया हुआ है ना, ये हो गया अपने आप में. Guys, you know, with all the advanced features that this train has, I can clearly say that this Vande Bharat is a computer on wheels. I mean, यार ये किसी चलते फिरते कंप्यूटर से कम नहीं है. इस ट्रेन में कितने सारे कैमरास लगे हैं, कितने सारे एडवांस सेंसर्स लगे हैं, कितने सारे एडवांस पैसेंजर सेफ्टी और कंफर्ट फीचर्स भी हैं. और यहाँ पे you know in this console there's a complete list of you know all the controls for every smallest detail possible to control this Vande Bharat. And for a fact, अगर बचपन से आपके दिमाग में ये सवाल था कि क्या ट्रेन की भी चाबी होती है, तो जी हाँ, ट्रेन की भी चाबी होती है. This is what I can see here in the cabin of the iconic Vande Bharat. है ना? ठीक है, इतनी बड़ी चाबी आई है. Guys, the best part is this train is made in India, is made by Indians and is made for Indians, and that too on a world-class level. The experience here was fantastic. Vande Bharat. वंदे भारत, शानदार वीडियो. एंड हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट एंड टेक्निकल गुरुजी मतलब गौरव भाई. धीरे धीरे ना जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनको कितना, क्योंकि उन्हें पता है ना लोग इनसे कनेक्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट भी सही चीज समझ पा रही है. और ये बहुत अच्छी वीडियो थी. मतलब आप कोर समझ पा रहे हो कि किस तरीके से अपना सिस्टम काम कर रहा है. आईफिल टावर पे यूपीआई वाले, वो मोदी जी ने शेयर की थी इनकी वीडियो. हाँ उस पे अपने भाई. और अगर हम बात करें जो क्रांति कह लो या फिर जो शुरुआत इन्होंने जो गैजेट इंडस्ट्री, जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में जो गौरव भाई ने करी है, तो और ये डायलॉग तो इनका सदाबहार है. तो चलिए शुरू करते हैं. और देखो, अगर आप देखते हो तो इंडिया तरक्की कर रहा है. वो बस दिक्कत होती है कि हम समझ नहीं पाते. हम चार लोगों की बातें समझ लें, कोई डिबेट में आ जाएगा कि टमाटर महंगा हो गया, ये सब चीजें नहीं होती. आप ग्राउंड रूट लेवल पे देखोगे तो इंडिया किस किस तरीके से हर फील्ड में, चाहे रोड्स कितने बढ़िया होते जा रहे हैं, रोड्स की स्पीड से बन रहे हैं इंडिया में, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो रहा है, ट्रेन सिस्टम कैसे डेवलप हो रहा है. वंदे भारत भाई साहब जिस तरीके से दिखाया वीडियो में कवर किया गौरव भाई ने, कि जैसे शुरुआत में दिखाया बिल्कुल ही लोहा, फिर उसमें ढांचा दिखाया, फिर उसके बाद फिर किस तरीके से अंदर वायरिंग होगी वो एक ढांचा दिखाया, उसके बाद फिर पूरा एक कंप्लीट उसका मेकओवर जब हुआ है, जब तैयार है बिल्कुल ट्रेन, उस तरीके से दिखाया. और छोटी छोटी चीजें यही होती है कि जब आप एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, आज के टाइम पर आपकी वर्क, आपका काम सारा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो गया. तो उसमें आपको चाहिए होती है, जैसे इलेक्ट्रिक सॉकेट चाहिए आपको, सीट के नीचे चाहिए, हर चीज चाहिए, चार्जिंग पॉइंट चाहिए, हर चीज. बंदा ये नहीं कि पहले ट्रेनों में क्या होता है ज्यादातर जो बाइक्स आ रही है ना, नहीं देखा है उसमें भी वो रहता है, क्योंकि अब ये ऐसी चीज हो गई है भैया जो नीड है आज के टाइम पे. ये वांट्स नहीं है, अब ये कुछ चीजें जो नीड बन चुकी है लाइफ में, डेली लाइफ में हमारी. और बहुत ही शानदार वीडियो थी और भाई अच्छा लगता है. और मेरा मन करता है कि ऐसी और वीडियोस आए जिसमें हमें ग्राउंड रूट लेवल पता लगे कि अपना सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है. बाकी अब भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं. बाकी जय हिंद, जय भारत जो लिख देना और वीडियो सर्च करना ना भूलें. बाय बाय, टेक केयर.